Assalamu alaikum students. Today, most among you will be delighted that it is after 20 lectures we finished in length and breadth Delhi Sultanate. And today we are starting a new age, new circa, that's from 1336 to 1565. And this, as you know, this age was dominated by three main events. While we saw a phase of disintegration starting from Delhi Sultanate in North India up to the arrival of Mughals, but we saw a very consolidated and stable empire, stable kingdom, that's until Portuguese made their advent into South India. And this stability in South was provided by none other than Vijaynagar and Bahmani kingdoms. Every year, at least you expect a question either in preliminary or in mains examination regarding Vijayanagar, because their age is magnificent in so many ways. Now, without wasting any further time, let us have some brief introduction about this age. Let's have brief introduction about this Vijayanagar. Who founded it? How were there any early expansion, or who consolidated the empire? And let's check how we are going to proceed within this lecture. Through this Vijayanagar kingdom. It will take almost 5 to 6 lectures to complete both Vijayanagar and Bahmani kingdom, and then we'll jump over to Mughals. And Mughals, as you know, will be the last thing that will be dealing in medieval section, and then we'll start our phase-wise advent into modern India. Starting from coming of Europeans to we'll be also studying about post-independence India. Some aspect, though questions are now not coming in mains examination regarding post-independent India, nor from world history. Numerically, their number has decreased, but you never know, they can ask anytime. We'll have to keep track of those things as well, though we may not study in detail, but we may regroup our study in such a manner that we at least some aspects and some concepts are touched, at least in both post-independence history of India as well as world history. ठीक? Now let's start our lecture for today. That is the age of Vijayanagar and Bahmanis. The age of Vijayanagar. Bahmans and Portuguese. And coming of Portuguese, we'll be studying here, nothing coming of Portuguese. Portuguese. Take, and this age, though empire itself, the Vijayanagar kingdom was itself found in 1336, but their glory started coming, their triumph started coming only after 1350. That's why we refer this circa as 1350 to 1565 up to Battle of Talikota or Banihati. Okay? Now, what happened if we analyze this age and the age afterwards? We'll come across a lot of happenings in the history, which are very important happenings in the history. Should we understand that? Come, let me take you to the journey. The first thing that happened is disintegration. It was disintegration. We started from
disintegration. We'll be studying two things, north and south. Disintegration of Delhi Sultanate. Now, and in North India, while the disintegration, the North Indian polity was not stable at all. Disintegration had already started and it had expanded in coming time. It was only after coming of Mughals that stability started coming back into the North India. What happened in South during this time that we analyze? In South, we founded, two kingdoms came to fore, Vijaynagar and as well as Bahmani. These Vijaynagar kingdom and Bahmani kingdom did not enrich South kingdom with political stability only. देखो इसने क्या कह दिया, एक तो हमारे पास political stability आ गई साउथ में, क्या आ गई? Not did we have only a political stability, a well-maintained law and order, but we also they contributed significantly in terms of culture, be it in terms of city building, capital building, or beautification of these cities and capitals through various architectural marvels that are going to be unraveled in next few lectures. ठीक? Also, in Vijayanagar kingdom, you will find the word Ashtadigazas, and they contribute significantly. They were the men of letters and contributed significantly to the literature of South India. ठीक? Literature and stuff. But it was in 1498 and North India. It was in Mughals 1526, first battle of Panipat. And it was in 1498 when Portuguese in South India made an advent into Calicut. ठीक है? और वहाँ से फिर एक struggle शुरू हो गया between land powers of Asia and sea, and confrontation started between various powers that had a significant sea power and between the land powers of Asia. ठीक है? और इसी बीच में इस विजयनगर में अगर 1336 or 1490 means it is almost a time period of 160 years, isn't it? It is about 162 years. इस 162 years में क्या चीजें हो गई, क्या इन kingdoms ने क्या हो गया? Yeah, it's also about, it's not about 1498, it's about 1565. It's about 230 years. Because ultimately, Vijayanagar kingdom, disintegrated soon after Battle of Talikota that took place in 1565. वहाँ तक तो इन्होंने बहुत 230-250 साल हुकूमत करना, या इन्होंने domination एक दिखाई 200 साल तक, more than 200 years. This becomes very imperative for us to know about these kingdoms, to know about their state, to know about their social structure, to know about their political ideas, to know about had they something which was very different from other. You come to know that Iyengar system and Nagara system, this Iyengar and this Iyengar system, you will have no mentions till now regarding that Nayaka system or Iyengar system. You will be seeing this first time during Delhi Sultanate.
and we did the Vijaynagar kingdom. And so you will also realize one important concept of state building, that is segmentary segmentary theory of state building. Huh? That was proposed by Robert Stein. तो आप बहुत सारा यहाँ से मटेरियल, और यूपीएससी के पास भी, जेकेपीएससी के पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है, और वो उनको यहाँ से सवाल उठाना आसान रहता है. और दिस एज वाज predominantly many foreign travelers came to India. They left their accounts regarding the structure of this Vijayanagar kingdom. उन्होंने क्या कहा, उनने उसकी ग्लोरी के बारे में क्या कहा, उनने उसकी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या, उनने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डाले. तो उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी हमें यहाँ समझने पड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि यूपीएससी ने नुनिस की जो बुक है, जो उसका इस पे जो उसने यहाँ इलेबरेशन किया है, उस यहाँ के सोशल सेटअप पे, यहाँ के सोशल कस्टम्स पे, यहाँ के वुमेन स्टेटस पे, तो यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल उठाया. हालांकि उसने यह कहीं नहीं लिखा था कि ये इस ऑथर के बारे में, उस फॉरेन ट्रैवलर ने ऐसा क्या कहा, बट ही गेव अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स अबाउट प्रेजेंट इन विजयनगर किंगडम. मगर उन तीनों की इंफॉर्मेशन हमें उसी बुक से मिलती है. तो मीन्स हमें कुल मिला के एक होलिस्टिक व्यू डेवलप करना है अबाउट विजयनगर एटलीस्ट, और बहमानी का भी हम साथ में ही पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. मैं दोनों का इकट्ठे स्टार्ट करूंगा, विजयनगर और बहमानी किंगडम. आज मैं इनकी फाउंडेशन बताऊंगा, ये कहाँ से आए, हाँ, फिर इनका अर्ली कॉन्फ्लिक्ट कैसे बिगिन हो गए, देन विल गो टू देयर कंसोलिडेशन एंड विल गो टू देयर, ये एक ही, हालांकि इस सारे किंगडम का नाम विजयनगर किंगडम रखा गया है, बट 4 डिफरेंट डायनास्टीज रूल्ड ड्यूरिंग द टाइम. ठीक है, एक कोऑपरेटिव फेडरेशन से ये कैसे एक एरा ऑफ ग्लोरी बन गया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कृष्णा देवराया. ये हमें सब कुछ समझना पड़ेगा. ठीक है, मगर यहाँ आपको एक ध्यान देना होगा कि हमें चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनिक और बड़ा ही मानो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा, अदरवाइज कंसेप्ट्स कैन गेट मिक्स्ड. हाँ, इसमें यहाँ फिर कंसेप्ट्स मिक्स हो जाते हैं. जब अगर कंसेप्ट्स मिक्स हो गए, फिर जाके एक कंफ्यूजन टेंड टू डेवलप ए कंफ्यूजन, एंड दैट कंफ्यूजन प्रोपगेट्स. हाँ, एंड इट जस्ट then you cannot perform better in your examination once you are confused enough. Huh? Let's start. समझ आए? This was just a brief description why we are studying it. This Vijayanagar kingdom was started in 1336 during the time of Muhammad bin Tughlaq. तब कौन नॉर्थ में रूल कर रहा था? Muhammad bin Tughlaq. और this was founded by Harihara and Bukka. ठीक है, founded by नाउ. एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हम यहाँ करने जा रहे हैं, उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा. You know something about this Harihara and Bukka? Their father was imprisoned by. You know, they were feudatories of Kakatiyas of Warangal.
And why is Kakatiyas of Warangal important? You are studying for UPSC, at least you should know. Ramappa temple. पढ़ा भी हमने, हाँ, that has been declared recently last year 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, JKPSC में पूछा भी गया। तो ये चीज़ें आप ऐसे ही रिकलेक्ट करते हैं। तो रामापा टेम्पल, काकातीयास ऑफ वारंगल, ठीक है। फिर जाके फिर आपको मेंस प्रिपरेशन में भी एक रिफ्रेश्ड मेमोरी आपके सामने रहती है, ठीक है। नाउ लेटर they became ministers in kingdom of Kampli. ये पहले क्या थे? Feudatories कि यहाँ काकातीयास ऑफ वारंगल। फिर क्या बने? मिनिस्टर्स। क्या बने? मिनिस्टर्स किस में? इन किंगडम ऑफ काम्पली। और यहां से देखो, किंगडम ऑफ काम्पली कहाँ का है? हाँ, काम्पली इज इन मॉडर्न डे कर्नाटका, ठीक है। मॉडर्न डे जगह कहाँ है? मॉडर्न डे कर्नाटका में। देखो, you know, these, ये जो काम्पली था ना, काम्पली, ठीक है, it was overrun by मोहम्मद बिन तुगलक। Why? Overrun by Muhammad bin Tughlaq because they gave refuge to Muslim rebel. This Kampli was overrun by Muhammad bin Tughlaq. For what reasons? Because they gave, what did they give? Refuge to Muslim rebels. And since this was overrun, this Kampli was overrun, this Harihara and Bukka, they were imprisoned. And as per legends, they were converted into Muslims. इनको किस में कन्वर्ट किया गया? They were imprisoned and converted to, and later they were also appointed to deal with any kind of rebellion. Now, you can understand from here one thing, कि इनको पहले मुसलमान बनाया गया, फिर इनको एक पावर दिया गया to deal with any kind of rebellion if it is present there. But there was some slight things that started unfolding in South. You know what? Some sort of situation developed. One, आपने किया वो क्या डेवलप, क्या हुई सिचुएशन? जो मुस्लिम गवर्नर ऑफ मदुराई था, मुस्लिम गवर्नर ऑफ मदुराई डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। जो मुस्लिम गवर्नर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंट किया था, उसने क्या डेवलप्ड? ही declared himself independent, कि मैं अब दिल्ली सल्तनत के अंडर काम नहीं करूंगा। Similarly, Hoysalas and Kakatiyas tried to assert their independence. देखिए, यहां से आप क्या आपको मिला? यहां से आपको ये सिचुएशन मैंने आपके पास दी, तो अगर आप हरिहरा या बुका होते, आप क्या समझते? आप क्या करते? जब एक सेंट्रल पावर के थ्रू एक फ्रंटियर प्रोविंस या दूर की प्रोविंस इंडिपेंडेंस इख्तियार करती है या असर्ट करती है,
तो जो आसपास के रूलर्स होते हैं उनको पता चल ही जाता है कि this central authority, its power is diminishing in these provinces. And you know, using the same concept or keeping the same thing in mind, they forsake the master, their master, which was Muhammad bin Tughlaq, and faith, that was Islam. ठीक? Now, therefore, they forsook. It's important. They forsook. What did they forsook? Their master and faith. And it was under the guidance of their guru, whose name was Vijaynagar, that they converted to Hinduism and established their capital at Vijaynagar. ठीक है? Was the same, right? विद्या राणा इनका गाइड गुरु था. उसके कहने पे इन्होंने एक तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए वापस से, और दूसरी क्या चीज की, दे एस्टैब्लिश देयर कैपिटल एट विजयनगर. दिस इज हाउ दे फाउंड दिस विजयनगर. हाँ, आया समझ? This is about how they, now this is how Vijaynagar kingdom came to light, or how did they found, how Vijaynagar kingdom was found. ठीक? Now let's turn our discussion to the foundation of Bahmani kingdom. ठीक है? क्योंकि अर्ली एक्सपेंशन में हमें ये दोनों जरूरत है. फिर कंसोलिडेशन फेज में अलग अलग चीजें हो जाती है, उनमें एक किस्म का रूट इख्तियार हो रहा है, इसमें एक किस्म का रूट इख्तियार हो रहा है, मगर एटलीस्ट अर्लियर हमें इकट्ठे पढ़ने हैं. ठीक? हाँ, यहां तक समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं है? तेज तो नहीं जा रहा हूँ. Why did you write 1350 there? I told you that time only कि 1336 is when they founded the kingdom, but actual triumph started 1350 के बाद. ठीक है? तो this does not matter here. You can say 14th century to 16th century was dominated by two important powers, especially Vijayanagar kingdom. So it does not matter. ठीक है? Now let's discuss about foundation of Bahmani. Again, you will find something interesting here. That's why usually what I do not focus much on foundations. Do I focus? No. Huh? I just say who founded it, but we have an interesting background story here. And this is going to, you have, based on this background, you will be able to reconstruct why they used to clash every now and then. Huh? So this is important. That's why we are having a focus on every. And sometimes you can also see UPSC asks us a question कि वो जनरल स्टेटमेंट देता है क्या, उस वक्त अगर आपको यही स्टेटमेंट दे कि जो हरिहरा एंड बुका दे दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ होयसाला, आप नहीं बोलेंगे. आप क्या बोलेंगे? दे वर फ्यूडेटरीज ऑफ काकतीयाज ऑफ Warangal, and later they became ministers in the kingdom of Kampi. So means
एटलीस्ट वो ये सारा हमें मिस नहीं करना। कहीं वो ऑरिजिन में भी सवाल दे सकता है, वो उनकी सोशल स्ट्रक्चर पे भी सवाल दे सकता है, पॉलिटिकल डायनामिज्म पे भी सवाल दे सकता है। एवरीथिंग हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, स्पेशली जो खतरनाक किंगडम्स होते हैं जिनका वैल्यू एग्जामिनर की नज़र में अच्छा खासा होता है, तो वहाँ हमें चीज़ों को इग्नोर करने से गुरेज करना चाहिए। ठीक, नाउ फाउंडेशन ऑफ बहमान की। It was founded in 1347. Also during the times of Muhammad bin Tughlaq, both the kingdoms were founded during the reign of when Muhammad bin Tughlaq was the Sultan of Delhi. ठीक? But this was founded 11 years after this foundation of Vijaynagar kingdom. And its foundation was laid down by an Afghan adventurer. He was an Afghan adventurer, Alauddin Hassan. सर, फिर इनको बहमानी क्यों बोलते हैं? आपने तो हमें कंफ्यूज किया। अगर इसकी जो इसका फाउंडर था उसका नाम अलाउद्दीन हसन था, ठीक है, हाँ, इसका नाम बहमानी किंगडम क्यों था? ये देखिए, यू नो दिस ये अलाउद्दीन हसन, he had risen to services under his master Brahman, जिसका नाम था गुंगू। क्या था? जो ये सर्विसेज में किसकी सर्विसेज में राइज हो गया था? ब्राह्मण, जिसका नाम गंगू था। ठीक है ना? और इसको दूसरा नाम कहा जाता है हसन गंगू। हाँ, तो अलाउद्दीन हसन का दूसरा नाम क्या है? हसन गंगू। आपको इस बारे में हमेशा सवाल, एटलीस्ट यूपीएससी तो इस पे सवाल नहीं पूछेगा, मगर कभी कभार जेकेपीएससी में भी एक वन वर्ड क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, एसएसबी में तो हो ही सकता है, उसमें पॉसिबिलिटी काफी। ठीक है, अब सर अभी भी हमें समझ नहीं आया है बहमान कहाँ से आया है। हमें तो हसन गंगू तक समझ आया, बिकॉज हमने बुक्स में देखा है कि कहीं पे लिखा है इट वाज फाउंडेड बाय हसन गंगू, कहीं पे लिखा है अलाउद्दीन हसन, कहीं पे लिखा है अलाउद्दीन हसन बहमान। तो आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हर किसी चीज के पीछे एक अपनी हिस्ट्री होती है। ठीक है, ये बर्मा क्या था इसका मास्टर। ठीक है, एंड once he founded this, Alauddin Hassan founded this Bahmani kingdom after his coronation। इसके बाद क्या होती है? coronation। और इस coronation में इसने अपना नाम, एक टाइटल मान लिया, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। बस हो गया कंफ्यूजन दूर। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। सर हमें भी बहमान समझ नहीं आ रहा है, इसकी क्या हिस्ट्री है? अगर आपने सर सब चीजों की हिस्ट्री बताई, बहमान की तो हमें हिस्ट्री पता नहीं है। ये जो बहमान वर्ड है, he used this Bahman word in his name, because he traced his descent, origin to the Iranian hero whose name was Bahman Shah। आया समझे बहमान शाह कहाँ से आ रहा है? हाँ, और इसी के नाम पे फिर ये सारी किंगडम का नाम क्या पड़ा? बहमानी किंगडम। बहमान शाह इसने वर्ड इस्तेमाल किया because he traced his origin to an Iranian hero whose name was Bahman Shah, mythical hero। ठीक है, Bahman Shah। This is about foundation of the empire. This is about how it started, how they. Now, after this, we have to come to expansion. But since
we are running out of time. But since we are running out of time, so it is highly advisable for us to start early phase of expansion and early conflicts in our next lecture, ताकि continuity develop हो जाए, ताकि continuity break ना हो जाए, ठीक है। और फिर मैं कल आपके पास एक मॉडल दूंगा कि कौन सी डायनास्टीज थी विजयनगर किंगडम में जिन्होंने रूल की, ठीक है। और उनमें से फिर इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, और सारा फोकस हम कहाँ की ओर ले जाएंगे जब हम इनकी ग्लोरी पढ़ेंगे। विल टेक आवर फोकस टू तुलवा डायनास्टी, जिसके एक अहम किंग कौन थे, कृष्ण देवराया, और वहाँ हम डिटेल में इसके पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ली में आइडिया दूंगा किनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट आवर रियल फोकस वुड बी स्टडी what happened during the times of कृष्ण देवराया। तो वहाँ हमें फुल फ्लेज्ड डिटेल पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।